Hello everyone. I hope everything is fine with you. Again, in this session, I've come up with another major theme that can be asked in the UPSC in the future out there. So you must get certain amount of points and perspective about this topic. This is nothing but an interjection or intersection point of what we called as economy and society, and what you can say even the government policy out there. So let's begin this lecture. So what we're going to study, let me give you a brief about this. What we're going to study, let me give you a brief about this. It's nothing but a composition or intersection point or intersection point, intersection point of what we called as, of what we called as, of what we called as economy, of what we called as economy, what we called as government policy, government policy. Mhm. Good morning, Neerav Mali. Good morning, bhai. So again, what we're going to study in this session is nothing but an intersection point of what we call as economy, government policy out there that is there in your paper 2, government policy, and of course society. So this question can be asked, or these points can be used in different papers of UPSC. For example, for government policy, there is we got GS2 out there, GS2 examination in UPSC civil services. For society, it is GS1, GS1. For economy, it is called as GS3, GS3 or GS1 and GS2 out there. These are certain economies. These are certain three things out of which we can expect certain points that can be used across all the papers out there. So what is society? Social justice. नीरव, सोशल जस्टिस इज अ पॉइंट भाई. जैसे अगर मैं आपको बताऊं, सोशल जस्टिस आपका एक पॉइंट है GS1 में. GS1 में तो आप उसमें सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं. जैसे मैं आपको अगर ब्रीफ दूं तो GS1 आपका मेंस का एग्जामिनेशन होता है यूपीएससी में. उसमें 3 सब्जेक्ट्स मेजर कवर होते हैं. थीम्स कौन सी हैं? कुड बी आस्क अबाउट हिस्ट्री एज वेल, कुड बी आस्क अबाउट एज हिस्ट्री, कुड बी आस्क अबाउट सोसाइटी विच इज सोशल जस्टिस एंड ज्योग्राफी. ये आपके मेजर थीम्स हैं जो आपके पेपर 1 पे GS1 में कवर होते हैं. GS1 में कवर होते हैं और सारे जीएस के एग्जाम्स आपके 250 मार्क्स के होते हैं. जैसे यहाँ पे अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो GS1, GS2, GS3 का एग्जाम और GS4 का एग्जाम. ठीक है. उसके बाद आपके 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं. ऑप्शनल वो सब्जेक्ट होता है जो आप डीप में पढ़ते हैं और उसके 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, और एक आपका एग्जामिनेशन होता है एसए का. ठीक है. अगर मैं बोलूं ये सारे एग्जाम्स GS1 250 मार्क्स, GS2 अगेन 250 मार्क्स, GS3 250 मार्क्स, GS4 250 मार्क्स. ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 मिला के दोनों के 500 मार्क्स, एंड अगेन एसए के भी 250 मार्क्स. यहां से आपको अलॉट होता है क्या क्या हिसाब है. सो सर सब ये आपका बेसिक थीम है. एसए में आपने अगर पीवाईक्यू देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि फिलोसॉफिकल एसे आते हैं. फिलोसॉफिकल एसे आते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए उस एसे को डीकोड करने के लिए और लिखने के लिए. GS1 में मैंने आपको बताया मेजर थीम्स क्या हैं. हिस्ट्री, सोसाइटी विच इज कॉल्ड सोशल जस्टिस एंड ज्योग्राफी. GS2 में क्या है? GS2 में सर आप पढ़ते हैं अपना फेवरेट, किसी के लिए फेवरेट होता है, किसी के लिए नहीं होता, कॉल्ड पॉलिटी, गवर्नेंस
एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक, ये आपका आता है GS2 में। ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू, डन। ठीक है, ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर। और GS3 में मेजर थीम जो आती है वो इकोनॉमी आती है, इकोनॉमी आती है। इसके इंटरसेक्शन के पॉइंट हम पढ़ेंगे। और GS4 में आपका एथिक्स इंटीग्रिटी वगैरह आता है, एथिक्स इंटीग्रिटी। ठीक, इसमें इकोनॉमी आता है GS3 में, डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, एनवायरमेंट आता है, और इंटरनल सिक्योरिटी। ये आपका हिसाब रहता है पूरा यूपीएससी के मेंस का। ठीक है, ये आपका हिसाब रहता है पूरे यूपीएससी के मेंस का। आई होप कि आपको पसंद आ गया। ठीक है, थैंक्स फॉर दिस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है सर हमारा, ऑफ कोर्स मैंने आपको बता दिया, एक वेन डायग्राम मैंने अंडरस्टूड बना दिया, वेन डायग्राम आपको बना दिया। और वेन डायग्राम में हम देखेंगे कि इकोनॉमी, गवर्नमेंट पॉलिसी और सोसाइटी का इंटरसेक्शन पॉइंट। यानी अगर आपने मैथ्स पढ़ी है तो हम ये वाला पॉइंट हिट करना चाहते हैं कि यार ऐसा पर्सपेक्टिव मिले कि तीनों के आंसर एक साथ हम पॉइंट्स जोड़ सकें। लेट्स मूव ऑन टू दिस। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आउट देयर। आपको पता है एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आउट देयर। तीनों रिफॉर्म्स आए थे जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी खुल गई थी। इंडियन इकोनॉमी, द ईयर 1990 मार्क्ड एज अ वाटरशेड मूवमेंट इन इंडिया समथिंग। एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, बजट स्पीच हुई थी और रैपिड जीडीपी ग्रोथ हुई थी। क्या है एलपीजी? एलपीजी क्या है? 1991 marked as a most important year for Indian history. Marked as a most important year as a Indian history, and you should know why it's important. It is important because of the 1991 reforms out there. It is important because of the 1991 reforms out there, which of course introduced us to what we called as LPG reforms. LPG reforms. LPG मतलब लिबरलाइजेशन, P मतलब प्राइवेटाइजेशन, G मतलब ग्लोबलाइजेशन। क्या है इन टर्म्स का मतलब एग्जैक्टली क्या है? सिर्फ प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है अब आपने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस दे दिया है काम करने के लिए। अब आपने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस दे दिया, मतलब क्राउड इन हुआ है, जो टर्म होती है क्राउड इन हुआ है किसका? प्राइवेट सेक्टर का। क्राउड इन हुआ है प्राइवेट सेक्टर का। क्राउड इन हुआ है प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया। पहले क्या था? पहले सर सब कुछ गवर्नमेंट ओन था, गवर्नमेंट ओन था। प्राइवेट सेक्टर ना के बराबर ही थे, ना के बराबर। और जब आपको पता है हर चीज गवर्नमेंट ओन होती है या पीएसयू वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, वहां पे एक इंस्टीट्यूशन बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी, जिसकी आप प्रिपेयर करें। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब गवर्नमेंट ओन सब चीजें हो जाती हैं। सर सिस्टर को आईएएस बनना है, कोर्स इज अवेलेबल, एब्सोल्युटली नीरव। आप इंक्वायर कर सकते हैं टीम के साथ। आपको अगर आपकी सिस्टर को बनना है, द अर्ली यू स्टार्ट द बेटर इट इज, द बेटर इट इज। और आप इंक्वायर कर सकते हैं। इफ ऑफ कोर्स आपको अगर टीचिंग पसंद आती है आप इन्वेस्ट करिए, नहीं पसंद आती आप कहीं और इन्वेस्ट करिए, एज सिंपल एज दैट। आपको अपनी रैशनैलिटी के हिसाब से वो बनना है। यहाँ मैं बेचने नहीं बैठा ना, मैं सेल्स टीम का मेंबर हूँ। आप अपने पैसे सही तरीके से इन्वेस्ट करें, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं नहीं चाहता कि कल को किसी को मॉनेटरी लॉस हो जाए। सबकी मजबूरियां होती हैं, सबको लिमिटेशन होती हैं, ऐसा नहीं है कि सबके पास बहुत पैसा है। सो एज सोचिए समझिए, लेक्चर्स देखिए, अगर आपको चैनल में पसंद आता है लेक्चर्स की ये क्वालिटी पढ़ा रहे हैं, इन्वेस्ट, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब गवर्नमेंट ओन होती है। आपको पता है ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? आईएएस आईपीएस। अब सर पॉइंट ये है कि जब ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है आईएएस आईपीएस, तो एक चीज इन्वॉल्व होती है, दैट इज कॉल्ड करप्शन। करप्शन। नॉर्मल लाइसेंसेस लेने के लिए भी, नॉर्मल किसी आप आज, मैं तो 1991 के पहले की बात कर रहा हूं, आप आज भी देखिए, अगर आपको किसी चीज का बिजनेस सेटअप करना है, बहुत सारे सरकारी कागजात लगते हैं। सरकारी कागजात कैसे आएंगे? भाई आप पैसा खिलाओ, ब्राइब।
आप अगर एसडीएम के ऑफिस चले जाओ और अगर आपको नॉर्मल राशन कार्ड भी चाहिए या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, नॉर्मल तरीके से नहीं निकलता, आपको पैसे देने पड़ते हैं, या आप ट्रैफिक पुलिस वाले को दे लो, 500 1000 रुपए लेके निकल ही जाते हैं, तो ब्राइब बहुत हो जाता है। तभी हमेशा कहा जाता है कि इन एन इकोनॉमी जहां ब्यूरोक्रेसी इज टू पावरफुल इज कंप्लीटली वेस्ट। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सर ब्यूरोक्रेसी इनएफिशिएंट भी तो है। ब्यूरोक्रेसी जर्नलिस्ट है, आईएएस ऑफिसर बहुत सारे डिपार्टमेंट में बैठता है, लेकिन क्या उसको सबकी नॉलेज है? नहीं, उसको थोड़ा थोड़ा हर चीज के बारे में पता है, जर्नलिस्ट है, स्पेशलाइज नहीं है अपने फील्ड में। ये प्रॉब्लम थी। तो क्या हुआ? प्राइवेट सेक्टर आया विद दिस रिफॉर्म्स। प्राइवेट सेक्टर आएगा तो क्या होगा? एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी आएगी, भाई लोग काम बेहतर करेंगे। आपको पता है सरकारी डिपार्टमेंट में लोग काम बेहतर नहीं करते, लंच टाइम जल्दी हो जाता है, एसबीआई में हर चीज जल्दी हो जाती है, बट यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम नहीं करोगे तो फायर कर देंगे, सिंपल सी बात है ना, वो पैसा काम का देते हैं। सो एफिशिएंसी आई, जॉब्स इंक्रीज हुई। गवर्नमेंट सेक्टर तो आपको पता है बहुत ज्यादा जॉब्स तो निकालती नहीं है, तो कैसे जॉब्स इंक्रीज होंगी? जॉब्स इंक्रीज हुई प्राइवेट सेक्टर के आने से, और देश की जीडीपी भी तो बढ़ेगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी वैल्यू एडिशन नहीं कर रही, वो टैक्सेशन इनकम से उसको सैलरी मिलती है सरकार से, टैक्सेशन इनकम से। प्राइवेट सेक्टर जीडीपी इंक्रीज करती है, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, सर्विसेज करेगी, सब कुछ करेगी। ये तीनों चीजें हुई, ये तीनों चीजें हुई किससे? विद प्राइवेटाइजेशन आउट, विद प्राइवेटाइजेशन आउट। इवन आज भी अगर आप देखेंगे काफी सारे प्रेजेंट डे पे पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स लॉसेस में चल रहे हैं, लॉसेस में चल रहे हैं, और गवर्नमेंट उसको सेल कर रही है, जैसे एयर इंडिया को करा था, जैसे एयर इंडिया को करा था। नाउ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सेल अदर पीएसयू एज वेल टू द प्राइवेट सेक्टर। क्यों? क्योंकि पीएसयू लॉसेस में चल रहे हैं, सरकारी बाबू चला रहे हैं, उन्हें नहीं पता, उन्हें ये चीज सारी नहीं पता। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि पीएसयू आज के टाइम पे हम कह रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। कि डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। आई होप दैट्स कंप्लीटली फाइन विद यू, आई होप दैट्स completely fine with you. Okay. Another thing is called globalization out there. Another thing is called globalization reform that has come under 1991. See, globalization ने क्या करा? It made the whole world as a one global village. Made whole world as one global village. As a one global image village out there. अब आप देखते हैं कि इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। विद दिस क्या हुआ? इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया। विद दिस व्हाट हैपेंस? विद दिस व्हाट हैपेंस? इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ, विद दिस व्हाट हैपेंस? इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो इंक्रीज हो, कल्चरल ट्रांसमिशन भी बहुत ज्यादा हो गया। कल्चरल ट्रांसमिशन भी बहुत ज्यादा हो गया। कल्चरल ट्रांसमिशन भी बहुत ज़्यादा होता है। अब सर कल्चरल ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? आज के हमारे युवा जेंजी आप देखते हैं, इवन इवन 10 साल पहले भी जीन्स पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, वो क्या है? वेस्टर्न अटायर ही तो है। How it happened? It happened because of globalization out there. How it happened? Because of globalization out there. It made the whole world as a one village. Whole import export करते हैं। आज आप कोरियन ड्रामास देखते हैं, हॉलीवुड मूवी देखते हैं। What is this? This is just a positive repercussion of what we call as a globalization. अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है। भाई आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, कल्चरल ट्रांसमिशन हो रहा है,
जो ग्लोबल मूवमेंट्स थी आपके पास आ रहा है, आप आज बाहर पढ़ने जा सकते हैं, आईवी कॉलेज जा सकते हैं, हार्वर्ड स्टैनफोर्ड जा सकते हैं. दैट्स द इंपॉर्टेंट ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज अ ग्लोबलाइजेशन. दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज अ ग्लोबलाइजेशन प्रॉब्लम आउट देयर, called as a globalization problem out there. Okay, globalization problem out there. ठीक है, ठीक है. नाउ देयर इज अनदर कॉल्ड लिबरलाइजेशन. आपने इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया. दैट मीन्स नो मोर लाइसेंसेस आर रिक्वायर्ड. नो मोर लाइसेंसेस. आपने फ्री कर दिया है इकोनॉमी. आपने फ्री कर दिया है इकोनॉमी को. आपने इंडियन इकोनॉमी को फ्री अप कर दिया. आपने इंडियन इकोनॉमी को फ्री कर दिया है. फ्री कर दिया है. इंडियन इकोनॉमी को फ्री कर दिया है. इसका मतलब क्या हुआ? You don't require licenses out there. Don't require licenses out there. Don't require licenses out there. पहले आपको ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड होना करता था टू गेट लाइसेंस आउट देयर. लाइसेंस लेना पड़ता था इन ऑर्डर टू ओपन अप सर्टेन बिजनेसेस आउट देयर. बट अब आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है. आप अपने आप को कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर करवाइए एंड यू आर डन एंड डस्टेड विद दैट. यू आर कंप्लीटली फाइन विद दैट. ये रिफॉर्म्स आए 1991 थैंक्स टू व्हाट वी कॉल्ड एज अ मनमोहन सिंह आउट देयर. ही इंट्रोड्यूस्ड दीस रिफॉर्म्स एंड लेट मी गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल. He was the best. He is still the best out there when it comes to his output to the Indian economy. Again, a genius personality out there, alum of Delhi School of Economics, genius personality. He gave this idea of and implemented what we called LPG reforms. Otherwise, 1991 में India was facing what we called as a BOP crisis, balance of payment crisis face कर रहे थे. Forex reserves आपके पास नहीं थे in order to repay certain debt. In order to repay certain debt. As a result, आपको अपनी इकोनॉमी को ओपन करा ताकि आप कुछ चीजें एक्सपोर्ट कर पाए और आपके पास पैसा है. और आपके पास पैसा है. Okay, so let's move on to the next thing. LPG reforms, historic budget speech. Manmohan Singh's 1991 budget speech famously declared India is now wide awake, signaling new era of economic openness. These reforms sparkled unprecedented GDP growth, transforming India into global economic power. Now, this is a very important line. आप ये line अपनी essay में use कर सकते हो. India is now wide awake. India is now wide awake. That's the statement that you should. India is now wide awake. डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्टेटमेंट है. इंडिया इज नाउ वाइड अवेक. India is now wide awake. That means India is opened. India has opened. It is ready to accept all sort of opportunities. It is ready. It is ready to accept
all sort of it is ready to accept all sort of opportunities out there that's been available in the world. It is ready to accept all sort of opportunities that's been there in the world. ये एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट है और आज भी इंडिया रेडी है. इवन आप ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं when it comes to India is not wide awake in terms when it will approve what we call as regional comprehensive economic policy. जब अगर आज के टाइम पे रिसेंट जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है विद यूके, इट्स नथिंग बट इंडिया इज नाउ वाइड अवेक. इंडिया इज एक्सेप्टिंग और बिकमिंग अ ग्लोबल पावर आउट देयर, interacting with other superpowers in terms of trade. Again, there are a lot of loopholes out there. India is still not that sort of superpower with China and US is, but it's been heading towards that. So free trade agreement has been signed. Being ratified by India. Being ratified by India out there. I hope that's clear with you. Economic growth versus social inequality. That's another issue out there. Economic growth versus social inequality, the uneven landscape. While India's post-liberalization GDP growth averaged showed robust 6 to 8%, making it one of the fastest growing major economies, this prosperity has not been evenly distributed. So social inequalities itself is a complete topic out there. Why? Why still, if India is growing that well, why there has been still so much of social inequality? Why there has been 80 crore people that's still dependent on the PDS system out there? Why there has been so much happening? This is because of social inequality out there. Social inequality. And one of the great examples of social inequality is nothing but what we called as a jobless growth out there. What we called as a jobless growth out there. Jobless growth out there. Okay. Now, still, if you look, India is still growing out there, but without jobs out there. Without jobs. As you can see, it's been growing with a robust 6 to 8% per annum, but still the jobless growth is there. There is no jobs out there. If you look at the government vacancies that's been there, it's too less. It's too less as compared to the people who apply for that job. It's too less when you compare it to the people who applied for the job. Even private sectors, there has been a bearish run in the economy that's been going on. There are not too much of jobs out there, and if they are not giving that much amount to any person out there. Say for example, कोई अगर 60,000 की नौकरी कर रहा है, वो दूसरी जगह स्विच करेगा, he would expect कि यार 80,000 तो मिले, but the economy is not giving that much amount at this moment. It's not giving that much amount at this moment. That's something crazy out there. So social inequality is there. There's certain people who are millionaires, billionaires out there, Ambanis, Adanis, but there are large proportion of people who don't own any amount of resource in this Indian economy, who own meager, who own meager resources in Indian economy. And how you can show a social inequality when it comes to economics? Through Lawrence curve. Through Lawrence curve out there. Through Lawrence curve. Through Lawrence curve out there. What's a Lawrence curve? Let's see. I'm going to draw this curve and we'll show you how inequality is represented on a graph out there.
this is the economy. This is the Lorentz curve. Now, if you want to show a Lorentz curve out there, on y-axis, I'll represent what we called as a percentage of income. Percentage of income. Percentage of income or percentage of population. On x-axis, I'm going to show you what's called as a percentage of population. Percentage of population. So let me give you markings for this. Let me give you markings for this. Just give me a moment for this. Let me draw it neat and complete. Let me draw it neat and complete. Percentage of population. So this is, let me give you a marking for this. 20%, 40%, 60%, 80%, and 100%. Okay. Again, on y-axis, this is called y-axis, this is called x-axis. So y, x. Again, gonna give certain rankings to this. 20%, 40%, 60%, 80%, and 100%, and 100% out there, and 100% out there. Okay. Let me close this square up. Let me square this up. Let me square this up. Let me square this up. This will be termed as, now this is what we called as, perfect equality line. This is what we called as perfect equality line. Perfect equality line. Now this is considered to be at this moment, this will be considered to be a Lorentz curve. This will be considered to be as Lorentz curve. Lorentz curve particularly shows what we call as a inequality out there. Inequality out there. How? It can be calculated through Gini coefficient. It can be calculated through the form of Gini coefficient. It's just nothing but a mathematical representation of what we call as a social inequality that is existing in our society. So how we calculate that? Through Gini coefficient. Gini coefficient. Now obviously Gini coefficient give two extreme out there, that is 0 and 1. 0 and 1. 0 represents perfect inequality, represents the perfect equality, and 1 represents the perfect inequality, and 1 represents the perfect inequality.
perfect inequality out there. So what's the formula for this Gini coefficient? The formula for Gini coefficient is the distance between or area between the perfect line and Lorentz curve divided by area under the perfect line. Area under the perfect line. Okay, I hope that's clear with you. Now let me calculate this for you. Area between equality or perfect equality line and Lorentz curve. Suppose there has been some area. It's gonna be 0 something 0.75. Area under the perfect line say 1. It will come out to be something. Now I'll give you a certain anecdote for this. Suppose this Lorentz curve overlaps this perfect equality line out there. So if I draw this Lorentz curve over and above the perfect equality line out there, draws the perfect equality line there. So now ये जो Lorentz curve है, it's been overlapping this perfect equality line. Calculate this area between perfect line and Lorentz curve. It becomes 0, and anything if there is certain called 0 in numerator out there, it will become 0, and 0 shows what? Perfect equality. It is not perfect equality. Perfect equality is a myth out there. Perfect equality is a myth out there. No country in this world operates on a perfect equality. So if a statement comes, I would say take that no country in this world, no country in this world, no country runs on perfect equality. On perfect equality. Even the most advanced economies, especially when you talk about the Scandinavian nations out there, Denmark, Norway, Sweden, they even don't have a perfect equality out there. That's impossible to achieve. There will be some sort of inequality because it is a market. It is a market. It is nothing but a market that's been offering more to a merit. But again, in India, even the merit doesn't get too much of money out there. It all depends upon the nepotism and the references that's been working out of the economy. That's been there in the economy. So you can see that how it's been going on. When you talk about the India's Lorentz curve, it's been around 0.25, approx 0.25 out there. I hope that's clear with you. Okay. I hope that's clear with you. I hope that's clear with you. Okay. Let's move on to the next slide. So, as you can see, despite halving poverty, 234 million Indians still live below poverty line. That's still what we shows as a inequality out there. Poverty reduced from 45% in early 90s to 22%, but the still 22% is still high. Keep in mind that India's population is close to 150 crore, and 22% of this is major people out there, majority of a lot of people out there. You're calculating what we called as 22% of 150 crores out there. Now, when you talk about the social justice and welfare policies, again,
When you talk about India, see, India is not a capitalist economy complete, it's a mixed economy. When you talk about India, when you talk about India, it's a mixed economy out there. Mixed economy out there. Mixed economy out there. It's nothing but a mixed economy out there. It's a mixed economy out there. That means it has the features of what we call as a capitalism. It has the feature of what we call as a capitalism, and it also has the features of what we call as a socialism. Capitalism and socialism out there. Capitalism and socialism out there. So let me write it cleanly for you. Let me write it cleanly for you. Now, when you say what's a capitalism, capitalism that means that it only cares about it only cares about profit out there. Cares about profit. No one will have empathy. No one will have sympathy out there. It's only runs on profit. If you're giving services to the company, they only care about the profit out there. They don't care whether you're good, you're bad, you're facing certain amount of what we call as certain problems in your personal life, or you're facing what we call a burnout out there. No, they don't care about that. They only care about profit. But when we come on socialism, it is nothing but a government intervention. Government intervention. Nothing but what we call as a government intervention. Government intervention out there. What we call as a government intervention out there. Government intervention means the government interferes with its policies in order to protect marginalized section of society. In order to protect what we call as marginalized section of society out there. Okay, marginalized section of society out there. I hope that's clear with you. I hope that's clear with you. Okay, so it's nothing but a combination of both capitalism and socialism, but representation of what we call as capitalism and socialism. Capitalism and socialism. ठीक है, तो social justice and welfare policies, bridging the divide. Bridging the divide. So again, MG Narega has been there. That's the government policies in order to provide your job, especially in this jobless growth, especially in this era of jobless growth. Aadhaar DBT is there, direct benefit transfer, reducing corruption and increasing. DBT is another major reforms out there. Earlier, earlier what happens कि आपको जब सब्सिडी मिलती थी इज डायरेक्टली रिड्यूस डाउन द प्राइसेस एंड आपको शॉपकीपर से मिलता था कि सस्ता माल मिल जाता है. बट शॉपकीपर्स what they get into, they get into the what we call as leakages of the corruption. वो मार्केट में बेच देते थे. Now to avoid that sort of leakages, in order to protect these effective beneficiaries out there, the government introduced what we call as direct benefit transfer. Introduced what we call as direct what we introduce as a direct benefit transfer.
direct benefit transfer out there. Okay. Direct benefit transfer out there. And it's one of the major reforms that government took in order to provide safety net to what we called as a marginalized section of society. It's nothing but a safety net or a cushion that's been provided to the safety net. Safety net to what we called as marginalized section of society. Okay. I hope that's clear with you. I hope that's clear with you. Again, if you look, Aadhaar DBT is there, public distribution system is there. It's nothing but to distribute subsidized food grains to the poor out there. Subsidized to poor out there. To poor out there. Okay. Case study, Modi era economic growth and social impact. That's a case study. The Modi era has seen a significant economic strides, with India's GDP per capita increasing by approximately 40% from 2014 to 22, culminating in India surpassing the UK as a fifth largest economy. This has to be changed. Now it's the fourth largest economy out there. In terms of growth, we are doing pretty good. We are doing pretty good. We are the fourth largest economy in terms of nominal GDP. Fourth largest economy in terms of what we call as nominal GDP. Nominal GDP. So, first is of course US, second China, third Germany, and fourth comes India. Fourth comes India. I hope that's again is clear with you. I hope that's clear with you. Okay. Now again, urban employment. Despite growth, urban youth unemployment remains high at 16.8 in financial year 24-25, indicating job creation challenges. Job has been there has no jobs out there. Trust me, only you will only get a job if you have a very good degree out right from IITs or IIMs, or if you are coming from an affluent family, or if you have a superb connections out there. Otherwise, it is really tough out there. Or else you will get a meager salary of 20 to 25,000 out there. Nothing more than that. That's how thing works. आई डोंट केयर इफ समवन सेज कि हार्ड वर्क से सब कुछ हो जाता है. नहीं, हार्ड वर्क से सब कुछ नहीं होता. कुछ चीजें आपके लिए स्ट्राइक भी करनी चाहिए. ओनली देन थिंग्स मैटर. Only then things matter out there. Interlinkages, how economic policy shapes social fabric. Sectoral disparities. Liberalization boosted services and manufacturing but left agriculture and informal sectors are marginalized. सिंपल सी बात है, जब आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी फोकस करेगी सर्विसेज में तो आपका एग्रीकल्चर तो नहीं बढ़ेगा. एंड दैट्स बीन द केस. एग्रीकल्चर is all time low at this point time at this point of time. There has been a huge disguised unemployment that's been there in the agriculture out there. Social tensions has been there. Rising inequality fuels social unrest and limits inclusive growth. No inclusive growth. So let me give you another interesting perspective. If there would be too much of social inequality, if there would be too much of social inequality out there, if there will be too much of social inequality out there, it will lead to increase in crimes out there. It will lead to increase in crimes out there, as frustration will manifest. Frustration will manifest in the form of crimes. Will manifest in the form of crimes out there. Okay. Jobless growth, we have seen that. We've seen that. There has been a growth. There has been a growth. But because there has been too much of technology, there has been AI intervention out there, we are not getting proper jobs out there. We are not getting proper jobs out there. We are not getting any proper jobs out there. Okay.
we are not getting any sort of proper jobs out there. I hope that's completely fine with you. I hope that's fine with you. Okay. So, social fabric influencing economic policy, again, welfare demands, inclusive growth, electoral politics, social movement. All these are the loops. All these are loops that's been interconnected. Been interconnected. That's why we say that vote as per the development, vote as per the manifesto of the organization. Don't vote as per the religion, as per the caste that's been there, that's been sold to you. That's been sold to you. I hope it is clear with you. It is clear with you. Now, what's the path forward? Inclusive and sustainable development. What's the path forward? Job creation is the one thing that we need. And how will you create job? By boosting or giving, by boosting, by boosting what we call as, by boosting what we call as manufacturing sector. What we call as manufacturing sector out there. Okay. I hope that's clear with you. Climate resilient growth, empowering communities, and data transparency. All will lead to what we call as path forward and including sustainable development. I hope that's clear with you. I'll see you later. Thanks for this. Thanks for this.